Hello everyone, once again I am here with my new video, and in this video I will explain third chapter of your history book of class 8, Ruling the Countryside. So students, before starting any chapter we should know about what happened in the previous chapter and we need to create a background for this chapter. So before starting this chapter we will just memorize what happened in the previous chapter. How a trading company became a supreme power of India. Let's see. In the previous chapter from trade to territory, we knew that British East India Company, they came to India as a trading company and slowly they control over a large part of India. So in the Battle of Plassey, you can see here that Robert Clive, he is talking with Mir Jafar. So in the Battle of Plassey in 1757, British East India Company under the leadership of Robert Clive, they defeated Siraj-ud-Dowlah, the Nawab of Bengal, and with the help of Mir Jafar, the commander of Siraj-ud-Dowlah. After defeating Siraj-ud-Dowlah, they installed Mir Jafar as a puppet Nawab of Bengal. But after some time, Mir Jafar realized that East India Company they are using him. So he protested, and then British East India Company, they uninstalled Mir Jafar and they installed Mir Qasim as a new ruler of Bengal. But after some times, Mir Qasim also protested, which resulted the Battle of Buxar in the 1764. So Mir Qasim, with the help of Sujauddaulah and the Mughal Emperor Shah Alam II, he fought with British East India Company in the Battle of Buxar in 1764. So in this battle, British East India Company defeated Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II. So it was major victory of British East India Company, and slowly they control over a large part of India. After the Battle of Buxar, next year, the Treaty of Allahabad was signed on 12 August 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive. You can see in this picture Shah Alam II, he is giving a farman to the Robert Clive or Diwani, and Robert Clive of the East India Company. After this treaty, they gave to Diwani of Bengal to East India Company. Under the Diwani of Bengal, East India Company, they control over a large part of Bengal, and they got right to collect revenue from the Bengal because they were the Diwan of Bengal. So to collect revenue, they started many new initiatives, many new revenue systems. So in this chapter we knew about that revenue systems also. So as you know, British East India Company, it was a trading company, so it wanted to increase their income. The company effort was to increase the revenue as much as it could, and for that they buy cotton and silk from India very cheap, and they sell it in the European market at high prices. So by this way they
got a high profit. This increased their income, and within 5 years their income doubled. उनकी जो इनकम थी वो डबल हो गई. But there was one problem for the British East India Company. As you know, they were trading of cotton and silk from India. They were purchasing these things from India and they were selling it into the Europe. So there was one problem. Let's see what was the problem. So, as I told, they purchased cotton and silk from India. So they purchased these things with the gold and silver coins. So students, here you can see from India they are purchasing cotton and silk, and in return they are giving gold and silver coins here. So through this way you can see easily here that flow of the silver and gold, it is going to India, and slowly all the gold and silver it is going to India, and their treasury is being empty. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. So they need new technique to stop this flow of currency, flow of gold and silver. Before 1865, company had purchased gold in India by importing gold and silver from Britain. But after the Treaty of Allahabad, they got Diwani of the Bengal. उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई, and they got the right to collect revenue from the Bengal. तो अब उन्हें बंगाल से देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने का यहाँ पे राइट मिल गया है, एंड दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू एंड दे आर using now that revenue to purchase these things like cotton and silk and other things from India. तो आप लोग देख सकते हैं now they are using Indian money for their trade, Indian revenue from trade, and through this way they stopped flow of currency from Britain to India. So they are now using revenue of India for purchasing the goods. But soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Now let's see what happened. That time artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at low prices. So as you know, company they got they were purchasing goods from India, so they forced to villagers sell their goods in low prices. By this way, many villagers they face big problem because they did not get actual price of their goods. So by this way their condition became very problematic. Many peasants they were unable to pay high revenues. By this way their condition became declined. In the same time, in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 population was wiped out. So आप लोग देख सकते हैं इसी समय बंगाल में in 1770 एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और जिसमें लगभग 10 मिलियन जो लोग थे वो मारे गए, जो कि बंगाल की पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट थे. So, as the condition of Bengal very problematic, company
company's revenue demands also declined. So they started new settlements in the Bengal and other part of the India because they just wanted to revenue from India. So in the next part we will see which new settlements they introduced in India for the better revenue demands. One settlements initiated by Lord Cornwallis in 1793 called permanent settlement. In the permanent settlement, local rajas and talukdars recognizes as जमींदार्स. राजास जो लोकल राजा होते थे और तालुकदार्स जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वहाँ पर उन्हें बोला जाता था. So in under the permanent settlements they were asked to collect the revenue and then they needed to give it to company. तो एक चेंज जैसी यहाँ पर बनी हुई थी परमानेंट सेटलमेंट्स में फॉर द रेवेन्यू, आप लोग देखेंगे अभी. इन द परमानेंट सेटलमेंट देयर वाज एन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट. इन परमानेंट सेटलमेंट राजा एंड तालुकदार्स they were asked to collect rent from the peasant. उन्हें किसानों से कलेक्ट करना पड़ता था रेंट एंड देन पे रेवेन्यू टू द कंपनी. और जो वो रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसान से, पेजेंट से, वो उन्हें देना होता था कंपनी को. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर फर्स्ट किंग or talukdar, they are collecting revenue or rent, then they are giving it to company. As the name of this settlement was permanent, the amount to be paid was fixed permanently. तो इसमें जो रेवेन्यू जो पेड करना होता था वो परमानेंट था, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स था और हमेशा के लिए ये फिक्स था. अमाउंट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर. तो इसमें जो था परमानेंट सेटलमेंट में, इसमें जो अमाउंट था रेवेन्यू का वो कभी भी फ्यूचर में बढ़ना नहीं था, तभी इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट था. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टेट की डिमांड थी वो तो बढ़ नहीं रही थी बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट वाज फिक्स्ड, बट जो जमींदार थे वो बेनिफिट उठा रहे थे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. सो इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व दैट दे आर द राजा एंड तालुकदार, दे आर गिविंग परमानेंट फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी, बट they have possibilities, they have many possibilities here to increase their income also. So they pressurized peasants to increase their production. So by this way they got high profit and company they just got a fixed revenue. So as Raja and Talukdar they are collecting revenue from peasant, so anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. तो इसमें जो राजा और तालुकदार होते थे उन्हें कहा जाता था जमींदार. वो जमींदार की तरह काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. सो इफ एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, तो उसकी जमींदारी चले जाती थी. एंड न्यूमरस जमींदारीज वेर सोल्ड ऑफ अ ओकेजन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. और कंपनी क्या करती थी, उनकी जमींदारी एक ओकेजन ऑर्गेनाइज करती थी, वहाँ पर नीलामी कर दी जाती थी उनकी और सारी चीज़ें बेचती जाती थी, उनकी जमींदारी नीलाम की कर दी जाती थी.
As long as jamidaris could give out the land to tenants and get rents, they were not interested in improving the land. As you know, talukdar or rajas who called as jamidars, so they were not interested to improving the land because they knew that they had to give a fixed amount to the company. So they were not interested to improving the land. तो जैसा कि आपको पता होगा उन्हें फिक्स देना होता था कंपनी को, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज इम्प्रूविंग करने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे. बट इन दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स was very oppressive. Jamidars like Rajas and Talukdar, they forced them to give revenue, and when they failed to pay the rent, the cultivators had to often take a loan from the money lenders. तो यहाँ पर जो पेजेंट्स होते थे, कल्टिवेटर्स होते थे, किसान होते थे, अगर वो तालुकदार्स या राजा को टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन्हें मनी लेंडर से, यू कैन सी हेयर मनी लेंडर, तो जो पैसे उधार देते हैं उनसे पैसे लेने पड़ते थे. एंड व्हेन दे फेल टू रिटर्न दी मनी टू दी मनी लेंडर्स, तो उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द कंडीशन ऑफ द पेजेंट. आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट्स, एज यू नो, revenue was fixed. Company, they realized that they needed to change their policies. So they started one new policy, Mahalwari settlements, which is introduced by Holt Mackenzie. So in the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. तो यहाँ पर ये जो महालवारी सेटलमेंट्स है ये चलाया गया. Now you can see here northwestern part. This is of United Provinces और present day उत्तर प्रदेश. So यहाँ पर ये चला था आपका महालवारी सेटलमेंट, महालवाड़ी या महालवारी सेटलमेंट. So let's see. Mahalwari settlement introduced in 1822. In this settlement, under his direction, collector went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. So in this Mahalwari settlements, you can see that there was no role of the talukdars, rajas or jamidars. Company is collecting revenue directly to the peasants. So यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी है इन दी महालवारी सेटलमेंट्स वो डायरेक्ट फील्ड पे जा रही हैं चेकिंग करने, मेजरिंग करने, जो कलेक्टर हैं, एंड अकॉर्डिंग दी लैंड दे फिक्स्ड रेवेन्यू. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate that revenue that each village had to pay. So in this, as you saw in the previous picture, they are inspecting the land. So they estimated the revenue by inspecting the land. So ईच विलेज हैड टू पे दैट रेवेन्यू, और विलेज को बोला जाता था महाल. तो जो यहाँ पर महालवारी सेटलमेंट है, इसमें जो महाल है इसका मतलब होता है विलेज. यू कैन सी इन दी रैकेट्स. इन दी महालवारी सेटलमेंट, कंपनी रिमूव्ड जमींदार्स एंड राजास एज अ तालुकदार्स एंड दे अपॉइंटेड विलेज हेडमैन. जो गांव के विलेज हेडमैन होते थे, जो सबसे वहाँ पे बुजुर्ग या सबसे जो बड़े जमींदार होते थे, विलेज हेडमैन, उन्हें ये काम सौंपा गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का. द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन. तो यहाँ पर ये चार्ज विलेज हेडमैन को दिया गया.
आप लोग देख सकते हैं इन द अंडर महालवाड़ी सेटलमेंट। वन मोर थिंग दे चेंज्ड हियर, द रेवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। सो इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि सेम ही था, एक ही जैसा रेवेन्यू चलना था, वो बदलना नहीं था, उसकी जो कॉस्ट थी। बट इन दी महालवाड़ी सेटलमेंट द रेवेन्यू वॉज बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, ये समय समय पर ये बदलता रहता था, यानी इसकी जो प्राइस थे वो बढ़ते रहते थे। सो as we studied about that revenue system of north eastern part of India, so now what was happening in the southern part of the India? So they also started new system in southern India, South India. So in this topic we will read about Munro system or Ryotwari system. So it is introduced by Thomas Munro, Governor of Madras from 1819 to 1826. So आप लोग देख सकते हैं जो मुनरो सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम था वो शुरू किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा, जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे 1890 टू 1826 तक। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after war with Tipu Sultan. In the previous chapter, you studied about Anglo-Mysore War, जो मैसूर के जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, they died in the Seringapatam in the 1799, and then their territory annexed by the company. So first it was tried. तो सबसे पहले जो मुनरो जो रियोतवारी सिस्टम है वो इसकी शुरुआत की गई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा। उन्होंने केवल ट्राई किया हुआ था स्मॉल स्केल पे, जो एरिया उन्होंने टीपू सुल्तान से जीता हुआ था। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, और इसे डेवलप्ड किया थॉमस मुनरो ने। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और पूरे साउथ इंडिया में इसे मुनरो द्वारा चलाया गया। सो इट वाज द रियोतवारी सिस्टम। So in the Ryotwari system, the settlements, they argued, had to be made directly within the cultivators. So as you studied about permanent settlements and Mahalwari settlements, in the permanent settlements, their company given the charge to collect the revenue to the Raja and Talukdars. In the Mahalwari settlements, they gave to charge to the village headmen, but here they argued had to be made directly with the cultivators. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कल्टिवेटर से डायरेक्ट ही हमें टैक्स लेना चाहिए। Who had tilled the land, जो उस खेत में जो अपने लैंड में खेती करता है फ्रॉम जनरेशंस, बहुत अपनी पीढ़ियों से। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. और उसका जो खेत है, जो किसान है जिससे हम डायरेक्ट लेंगे इसमें मुनरो सिस्टम में, रियोतवारी सिस्टम में, तो उसका पूरा जो फील्ड है उसे पहले सर्वे किया जाएगा पूरा, फिर उसका रेवेन्यू वहाँ पर लगाया जाएगा उस पर। So as we studied that company, they time to time increased their revenue. So by driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high revenue demands. तो जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने रेवेन्यू के जो डिमांड्स थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए। दे वांटेड अ हाई प्रॉफिट, वो चाहते थे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, प्रॉफिट हो। सो जो इनकम थी वो उन्हें रेवेन्यू से मिलती थी। सो दे इंक्रीज्ड रेवेन्यू। सो when peasants they were unable to pay, riots fell to countryside, villagers became deserted in many areas. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब रेवेन्यू बहुत बढ़ते गया, आर्टिशन जो थे उन पे भी
प्रेशराइज किया गया। सो मैनी पेजेंट्स, उन्होंने क्या किया, वो अपने जगह जो थी वो खेत छोड़ के भाग गए वहाँ से, और कई जो गांव थे वो खाली हो गए। By the late 18th century, company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. So, अभी तक तो बाकी चीज़ों पर कंपनी का ध्यान था, बट बाय द लेट 18th सेंचुरी जो थे, कंपनी ने अब यहाँ पर इंडिया में ओपियम, जिसे अफीम बोला जाता है हिंदी में, और इंडिगो, इसकी इंडिगो जिसे बोला जाता है नील, जिससे कि ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसकी खेती इंडिया में करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स उन्होंने शुरू किए, जैसे जूट, शुगर केन, टी प्लांटेशंस, पैडी, wheat, cotton. So in this map you can see the company, they started cultivation of other things in many part of the India, like in Bengal they started jute production, in Assam or eastern India they started tea plantation, in United Provinces present day Uttar Pradesh sugarcane production, in Punjab wheat and cotton production, in Maharashtra they started cotton production, and Madras paddy production. So in this picture you can see all the things. Company, they were interested to production of indigo in India. So why they wanted to produce indigo in India? So in the next slide we will see about this. What was the use of the indigo? So here is two pictures, one from India, Andhra Pradesh, and one from Europe, England. So here you can see in the first picture a kalamkari print, which was famous in Andhra Pradesh, and second was from England, a Murray's cotton print. So in both picture you can see the blue color. In the left side you can see kalamkari print, there is rich blue color, and in the England this is dull blue color. So that time for the printing from the all over the world, they needed dye to color the prints. For the blue color they needed the production of इंडिगो, जो नील होता था उसका प्रोडक्शन होता था ये ब्लू कलर बनाने के लिए, और जो इंडिया का ब्लू कलर था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ वुड विच वॉज यूज्ड इन यूरोप दैट टाइम, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ब्लू कलर, बट द ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय वुड वॉज लेस good quality than indigo. So most of the European manufacturers, they preferred indigo in the place of wood. In this picture you can differentiate wood and indigo. You can see here the indigo color is bright, but wood, its color is dull and light. So in this word map you can see the indigo, it produced in the tropic zone, and the wood in the temperate zone. It was the best condition to grow indigo and wood. So here you can see
India, it also produced good quality of indigo, but in Europe the wood was in demand. As the demand of indigo increased, many other European trading companies they made their colonies or production center in other part of the world. Like in this map you can see the Portuguese they started indigo production in Brazil, Spanish in Venezuela here, English East India Company in Jamaica, French they started in Saint Domingo in Caribbean island, and other indigo plantation in North America also. So here you can see one more time Portuguese in Brazil, Spanish in Venezuela, English in Jamaica, and French in Saint Domingo in the Caribbean island here. So they started indigo production to fulfill of the demand. So as you are hearing plantation, so what is plantation? A large farm operated by a planter employing various फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. तो प्लांटेशन क्या होता है कि फार्म होता है जहाँ पे प्लांटर काम करवाता है, फोर्स लेबर होते हैं. प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन. सो जो प्लांटेशन होता है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के प्लांटेशन होते हैं, प्लांट बने होते हैं जहाँ पे फोर्स लेबर काम करते हैं. ये एक इंडिगो प्लांटेशन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. सो देयर आर अदर प्लांटेशन ऑल्सो लाइक कॉफ़ी, इंडिगो, टी, टोबैको, शुगर केन etc. As you can see here, indigo production in India became more profitable. So many British officials, many company officials, they left their jobs and became planters in India. So आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इंडिया में अब इंडिगो की मांग बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है. सो कंपनी के बहुत से ऑफिशियल्स जो थे वो प्लांटर्स बन गए, उन्होंने भी शुरू कर दिया यहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन. So that time in India, there was two types of indigo cultivation forms. First niche cultivation and second riyoti cultivation. So first we will discuss about niche cultivation. तो ये भी एक फॉर्म है इंडिगो कल्टीवेशन की. अब निज में क्या होता था देखिए, द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड. इसमें जो प्लांटर होते थे वो जो लैंड होती थी उस पर डायरेक्ट ही वो जो करते थे, प्रोडक्शन करते थे इंडिगो का. ही ईदर बॉट दी लैंड और रेंटेड, या तो वो उस लैंड को खरीद लेते थे या फिर किराए पर ले लेते थे. प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स, और जो यहाँ पर काम होता था वो लेबर्स को हायर्स करते थे और उनसे काम करवाते थे नीच कल्टीवेशन में. बात करें अगर रियोती कल्टीवेशन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट, जिसे बोला जाता था सट्टा. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ज़मीनें खरीद नहीं रहे हैं, ना रेंट पे ले रहे हैं, बल्कि वो रियोट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता था सट्टा. अब एग्रीमेंट क्या होता था, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम दी प्लांटर्स. जो भी इन इसको साइन करते थे रियोती सिस्टम में, उन्हें एडवांस पैसा मिलता था प्लांटर्स से एट अ लो इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. किसके लिए मिलता था, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत कम इंटरेस्ट पे मिल जाता था. और एग्रीमेंट में क्या शर्तें थी, द रियोट्स कमिटेड टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर हिज होल्डिंग. तो इसमें जो रियोट्स होता था उसकी जो भी ज़मीन होती थी, रियोट्स में किसान वो अपनी ज़मीन के 25% एरिया में इंडिगो उगाता था. एंड वन मोर थिंग, इंडिगो नीड फर्टाइल लैंड. इंडिगो उगाने के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड होता था, और जहाँ पर इंडिगो उगाया जाता था, इंडिगो प्रोडक्शन के बाद उस लैंड को बहुत टाइम लगता था दोबारा
फर्टाइल होने में, तब तक वहाँ पर किसी और चीज़ की भी खेती नहीं हो पाती थी. सो यू कैन सी हेयर, इजिली सी हेयर दैट अगर वो अपने 25% पे रियायती सिस्टम में जो किसान है अगर इंडिगो उगा रहा है तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसकी फर्टिलिटी है लैंड की वो कम होने लगी. सो ये तो था आपका डिफरेंटिएट निज और रियायती कल्टीवेशन में. तो निज कल्टीवेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम अगले उसमें देखेंगे इस स्लाइड में. The problems with niche cultivation. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. वो अपने एरिया को बढ़ा नहीं सकता था क्योंकि उसके बाद जितना एरिया होता था उसी में उसे करना होता था. लेबरर्स वेर नॉट ईजी टू मोबिलाइज्ड. लेबर को से काम करवाना बहुत ही इसमें मुश्किल होता था. दे वर नीडेड मोर लेबर्स. तो उन्हें बहुत सारे लेबर्स चाहिए होते थे निज कल्टीवेशन में. जैसा कि आपको बताया कि रियायती में तो क्या होता था, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन निज कल्टीवेशन में क्या होता था, इन्हें खुद के लेबर लगवाने पड़ते थे रेंट पे. बात करें एक निज कल्टीवेशन की और प्रॉब्लम्स की, तो इसमें जो प्लांटर्स होते थे दे नीडेड मोर प्लग्स एंड बुल्स. अगर बात करें 1 बीघा ज़मीन की, 1 बीघा, तो उसके लिए इन्हें 2 प्लग्स यानी कि 2 हल चाहिए होते थे. ये प्लग आप देख सकते हैं और बुल देख सकते हैं. अगर 1 बीघा ज़मीन है तो उसके लिए 2 प्लग्स, ये जरूरत 2 हलों की ज़रूरत होती थी. अगर बात करें अगर 1000 बीघा ज़मीन में अगर इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, आप खुद यहाँ पर बताइए. सो इट वॉज वेरी वेरी it was very costly. So I hope you have understood niche or रियायती system. Now, so in this picture you can see indigo plant where indigo plant change into indigo dye. ये ऐसा प्लांट है जहाँ पर इंडिगो जो प्लांट होता है उससे डाई बनाई जाती है इंडिगो की, और जिस डाई से कलर बनता है और जो एक्सपोर्ट की जाती थी उस टाइम पर ब्रिटेन को इंडिया से. सो दिस इज़ द इंडिगो प्लांट. और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग यहाँ पर जो ब्लॉक्स देख रहे हैं ये है वेट, इन्हें बोला जाता है वेट. अब इंडिगो प्रोडक्शन होता कैसे है, नाउ लेट्स सी. द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द indigo plant were first soaked in warm water in a vat, also known fermenting और स्टिपर वेट. जो पहला वेट होता है उसे बोला जाता है फर्मेंटिंग और स्टिपर वेट. चलिए पिक्चर में देखते हैं. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स. तो इसमें देख सकते हैं ये पत्तियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं फर्मेंटिंग और स्टिपर वेट. यहाँ पर पत्तियों को निकाला जाता है और फिर उसे उबाला जाता है प्लांट्स को. When the liquid began to boil and bubble, then rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vat. तो जैसे ही क्या होता है जो जिसमें इसे डुबाया जाता है लिक्विड जब बॉयल हो जाता है और उससे बुलबुले निकलने लगते हैं बबल्स, देन rotten leaves were taken out, तो लीव्स बाहर निकाल दिए जाते हैं एंड लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वेट, और जो लिक्विड होता है वो दूसरे वेट में डाल दिया जाता है. In the second vat, known as the beater vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. तो जो आपका सेकेंड वेट होता है उसे बोला जाता है बीटर वेट. वहाँ पर ये देख सकते हैं आप वेट बीटर, ये क्या करते हैं, इनके हाथ में जो पेडल होती है इससे उस लिक्विड को पीटा जाता है बार बार, और आप लोग देख सकते हैं इट इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्क. When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to wet. और जो आपका ये लिक्विड होता है जब ग्रीन में बदल जाता है, then blue lime water was added to the wet. तो जब वो ग्रीन और फिर ब्लू में बदल जाता है तो उसमें मिलाया जाता है लाइम वाटर. A muddy sediments settle at the bottom of the bed and the
क्लियर लिक्विड रोज टू दी सरफेस। तो इसके बाद क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है और जो मडी यानी मिट्टी वाला सेडिमेंट्स होता है वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कैसे अलग होता है ये। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द इंडिगो इज मेकिंग। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कैसे बन रहा है, हाउ हिज कलर इज चेंजिंग। At last, the liquid was drained off and the sediment that indigo pulp transferred another wet, जिसे बोला जाता है सेटलिंग वेट। इसके बाद लास्ट में जो होता है सेटलिंग वेट होता है। एंड द देन प्रेस एंड ड्राइड फॉर सेल, और उसके बाद उसे ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है जो कलर बनता है, और उसे पैक कर प्रेस किया जाता है और फिर सेल के लिए उसके ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, जो अभी हम पिक्चर में देखेंगे। सो इन दिस पिक्चर द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिगो बन चुका है अभी से, और ये यहाँ पर इसकी पैकिंग चल रही है और यहाँ पर मार्किंग चल रही है इसकी। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। सो यू कैन सी हेयर ऑल्सो पिक्चर ऑफ प्लांट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा प्लांट की, यहाँ पर दे आर बीटिंग। ये बीटर वेट भी आप दो लोग देख सकते हैं, फर्मेंटिंग वेट भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेटलिंग वेट भी आप लोग देख सकते हैं। सो दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। सो वी नीड टू लुक बैक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द प्लांटर्स इन द रियॉती सिस्टम। द प्लांटर्स वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे एंड दे गिव कैश एडवांसेस टू दी प्लांटर टू दी रियल्स। तो वो किसानों को देते थे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंड, दी कल्टिवेटर्स दे वर अनेबल टू पे दी टैक्स, पे देयर एडवांसेस। जो वो उन्हें पैसा मिलता था वो नहीं दे पाते थे। सो उसके बाद क्या हुआ, देयर कंडीशन बिकेम वेरी ऑप्रेसिव, पैथेटिक। So one more thing you can see here, there was another problem. So the planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil. जो indigo है best soil में उगाई जाती थी, which peasants preferred to cultivate rice, जिसमें पहले क्या किया जाता, जो cultivation of rice होता था। So earlier the peasants they use their lands to grow rice। तो पहले से वो राइस उगाते थे, आप लोग देख सकते हैं। बट आफ्टर द इंडिगो प्रोडक्शन देयर लैंड्स फर्टिलिटी दे डिक्लाइंड। तो लैंड फर्टिलिटी ख़त्म होने लग गई एंड कंडीशन वाज वेरी ऑप्रेसिव। दे वर जस्ट डिपेंड ऑन दी कैश। वो केवल कैश पे डिपेंड रह गए और खाने पीने की कमी हो गई और उन पर जो था कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो गई। सो जैसे स्लेव्स ने आपका अमेरिका में रिबेलियन किया था। सो इन इंडिया द इंडिगो कल्टिवेटर्स दे ऑल्सो स्टार्टेड रिबेलियन। तो आगे आप लोग देखेंगे। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. So you can see here they started rebellion. So they attacked on indigo factories. They killed many British officials. And not only men, women also they participated in the rebellion with kitchen equipments. They attacked on the British officials, their factories. They burned their factories, killed many officials. So it was very bad condition for the company and planters also. With the indigo cultivators, many other jamidars, local jamidar, they also participated in the rebellion because they were upset with the planters. After the rebellion, a lieutenant governor he visited in that areas the rebellion was going on. So after then
The magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contract. तो देख लीजिए उसके बाद ये जो थे मजिस्ट्रेट एस्ले एडन, इन्होंने इश्यू किया एक नोटिस और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था इसे ख़त्म किया गया. Elsewhere, now, while the time when India was fighting against indigo indigo planters, what was happening in other part of the world? Indigo making in the West Indies. So here you can see a plant in the Caribbean island, making indigo in Caribbean slave plantations. In the early 18th century, a French missionary, Jean-Baptiste Lebet, traveled to the Caribbean island and wrote extensively about the region. तो उन्होंने वहाँ पर ये लिखा वहाँ के बारे में, जो वहाँ पर उन्होंने ये इंडिगो प्लांट्स देखे उसके बारे में उन्होंने लिखा. Published in one of his book, the image shows all the stages of indigo production in the French slave plantations of the region. You can see the slaves workers putting the indigo plants into the settler vat on the left. You can see here. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर the laborers, they are working here and planter he is observing, supervising them. Another worker is churning the liquid with the mechanical churner in a vat, second from right. Two workers are carrying the indigo pulp hung up in bag to be dried. So here you can see in this picture the planters is at the center of the picture, standing on the high ground, supervising the slave workers. और आप लोग देख सकते हैं कि जो planters है ऊपर मिडिल में आप लोग देख सकते हैं ऊपर सुपरविजन कर रहा है सारे वर्कर्स को. So you can observe here how harsh condition was there at that time of the laborers there. Their laborers in India, the cultivators, the condition was same. It was very oppressive conditions. So they started rebellion. So students, it was the explanation of this chapter, ruling the countryside, and I hope you enjoyed the chapter. I hope you understood the chapter. Still, if you have any doubt, any problem, you can ask me in comment box. So now I am ending this chapter. Thank you.